हेलो एवरीवन, दिस शिता। सो आज हम लोग कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, जो कि क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। इसमें देखेंगे कि कॉस्ट क्या होता है। और कॉस्ट में भी दो तरह का और तीन तरह का कॉस्ट होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है, कॉस्ट क्या होता है, एंड सीलिंग कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है। आज इसके बारे में बात करिए, एंड देन we will talk about the relationship between TC, MC, and average cost and fixed cost and average variable cost. What is all about it? Okay. So, what is cost? As we all know that कह सकते हैं कि कॉस्ट क्या एक तरह से खर्च है। क्या है? खर्च या एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस और गुड्स। ठीक है। तो व्हाट इज कॉस्ट? it refers to it refers to the expenditure that is incurred by the by the producers. It can be explicit and implicit, right? It can be implicit or implicit on the factor as well as factor inputs. Non-factor inputs for a given output of commodity. तो क्या है? इट refers to the expenditure, कह सकते हैं एक तरह के खर्च that is incurred by the producers, जो producers के द्वारा incurred होता है। It can be, it may be explicit cost or implicit cost on the factors as well as non-factors inputs for a given output of a commodity। ठीक है। जब हम कोई आउटपुट प्रोड्यूस करने जाते हैं तो ये कॉस्ट, ये एक्सपेंडिचर लगता है। उस प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो खर्च लगती है, दैट इज व्हाट कॉस्ट। अब बात करें, यहाँ दो टर्म आया है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये कैसी कॉस्ट होती है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो explicit cost, let me tell you the explicit cost and another one is implicit cost. So, explicit cost say that the expenditure incurred or while taking or hiring labor or workers from outside, or we can say from the market. Okay, from the market when we hire factors from the market when we hire expenditure incurred. The cost incurred, that is what? The cost incurred, that is what? Explicit cost. Okay. While talking about implicit cost, we can say the opportunity cost. Implicit cost is what? The opportunity cost of using self on input. Opportunity cost, that is using self on इनपुट। मतलब ये कह रहा है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हम बाहर के फैक्टर्स और बाहर के रिसोर्सेज या इनपुट्स ना लगाने की बजाय जब हम अपने घर से या हम खुद लगाते हैं। लाइक अगर मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, मुझे प्रोडक्शन करना है या गुड्स प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना है, तो मैंने बाहर से लैंड एक्वायर ना करके जो मेरे पास लैंड पड़ी हुई थी, जो मेरे पास बिल्डिंग पड़ी हुई थी, या जो मेरे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज बची हुई थी, तो मैंने उसे प्रोडक्शन में लगा दिया। तो वो क्या हो गई? इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई, क्योंकि मैंने अपने अपने द्वारा लगाया गया प्रोडक्शन, अपने द्वारा लगाया गया जो भी रिसोर्सेज है या जो भी लैंड है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आ गया।
क्योंकि उसका मुझे कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बट एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है कि उसका मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो फैक्टर्स को फ्रॉम द मार्केट वी अक्वायर्ड, फ्रॉम द मार्केट वी why we have to make a payment in explicit cost. Okay, moving ahead. So let me make the difference between explicit and implicit cost. So explicit cost, implicit cost. Okay, explicit cost, it is the opportunity cost. It is the opportunity cost of purchasing inputs from the market, right? But this is in this implicit cost, it is the opportunity cost, or it is the opportunity cost, not purchasing, but we can write it here, opportunity. Okay, it is the opportunity cost of using self on self on inputs, right? Now, in second, we can say it is a measured in terms of cash payments that a firm makes to other for a purchase of inputs. Okay, so we can say it is measured. It is measured in terms of cash payments that a firm makes to others. But in implicit cost, it is we can say it is measured in terms of imputed cost, okay, or estimated cost of the self-owned and self-employed resources. So it is the measured. It is the measured in terms of imputed cost, right? In terms of imputed cost, or we can say estimated cost, right? कि मैंने मेरे पास जो रिसोर्सेज, मेरे पास जो लैंड, मेरे पास जो कह सकते हैं फैक्टर्स जो पड़े हुए थे, वो मैंने बाहर से ना खरीदने के बजाय मैं अपने घर से लगाया है, ठीक है, तो उसका कोई मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा टू आउटसाइडर्स, राइट? तो ये क्या कह सकते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट, राइट, ऑफ द सेल्फ on, and we can say also self employed resources, right? Now, taking example in explicit cost, we can say wages to permanent staff or salary to the permanent staff. Okay, so it will be what? It will go to explicit cost. Now, in implicit, the example of implicit cost, we can see that estimated rent, like whatever the land I have that was used in production process, that it will be okay. It would be some rent over here, over that land, okay, over that land. So this is what, like our own building that is used, our own building, my own building that is used in the production process. There would be some rent over there. Okay, so this will goes in implicit cost. Now, uh, talking about what is opportunity cost.
what is opportunity cost? So opportunity cost is nothing but we can see in order to we can say the cost that we forego or give up in order to have another one, right? So the cost of something that we forego or give up or that we sacrifice in order to have another one, that is what opportunity cost. Now another term, that is the difference between selling cost and production cost. So selling cost and production cost. What is the difference between selling cost and production cost? Is this same, or is this cost, that is selling cost and production cost, both are different? Okay, so selling cost and production cost both have some right. We can say selling cost are those expenditures. Selling costs are those expenditures that incurred hmm, that incurred by the producers to promote sell sell of the commodity. लाइक जैसे मैंने एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट किया किसी भी सेल को प्रमोट करने के लिए कि बेसिकली किसी भी कमोडिटी या गुड्स को प्रमोट करने के लिए मैंने एक एडवर्टाइजमेंट किया, ठीक है। तो इस एडवर्टाइजमेंट को करने में जो भी एक्सपेंडिचर लगा, जो भी खर्च आए, दैट इज व्हाट सेलिंग कॉस्ट। बट talking about production cost is totally different from selling cost. Now what is production cost? So production cost refers to the expenditure that is incurred by the producer. It could be explicit cost or implicit cost on the inputs for producing a given level of output, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट refers to the expenditure that is incurred by the producer, right? It could be explicit or it could be implicit cost on the inputs for producing a given level of output. जब आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोड्यूसर के द्वारा खर्च होती है, इट कुड बी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, जब दोनों कॉस्ट लगते हैं, जब दोनों खर्च होते हैं, एक्सपेंडिचर लगता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। So this is the difference between selling cost and production cost. Okay. Now another topic, that is short-run cost and the shape of short-run cost curve. Short-run cost क्या होता है और शॉर्ट रन में कॉस्ट का शेप कैसा होता है, ये दो देखते हैं, ठीक है। तो अनदर टॉपिक, दैट इज शॉर्ट रन कॉस्ट एंड शेप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट, ठीक है। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है और शॉर्ट रन कॉस्ट का
शेप कैसा होता है। तो ये बात करने से पहले थोड़ा हम लोग जान ले कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है। सो शॉर्ट रन इज द टाइम पीरियड, it is the time period which indicates the short, which indicates the shorter period. As we all know, the name should indicating the name is if the name itself is indicating short run. Okay, so short run is basically it is a time period which indicates the shorter period, or in this short run we are able to make a difference. We are able to distinguish between fixed variable and fixed factor and variable factor. So in short run only, on the basis of short run, we are able to make a difference between fixed factor and variable factor. Now, what is variable and what is fixed factor? Okay, so fixed factor, we can say land, we can say building. Okay, so fixed factor are those factors which we can't change, which we can't change if we increase the level of output, the level of output. So, in short period itself indicating we have a very short period. We have a very short period, we have very limited time, right? Limited time. In that limited time, we are not able to expand the fixed factor. We are not able to increase the factors. So we can say we are like building. Taking example of building, we can't say that we are able to expand the level of building. Okay, we are not able to expand the level of land that we have, or that I have. Okay, so let's suppose initially zero level of output. I have 1 hectare land, 1 hectare land. Initially, the level of output is what? Zero. It means that the production yet has not started. Okay, yet the land I have, which is going to produce, but initially, but yet I have not started the level of output or the production process. Okay, so initially it is what 1 hectare of land. But let's suppose the order I have received, that is 100 units of production of any commodity. In that case, still the land would be the same, that is 1 hectare. So, in short period, we are not able to, or I am not capable to expand the land, because I don't have that level of, I don't have that much of capital to expand land, and basically also I don't have much time to expand the land. Okay, so this will comes in fixed factor. Now talking about variable factor. Variable factor, the name itself indicating the variable, that means changing. Okay, so variable factor in short run, we are capable, or producer are capable to expand the level of factors, that means workers, raw material. Okay, the level of inputs, producers are capable to expand even in the short run. Okay, so producers are able to expand the level of input, that is what? Raw material, that is what? Workers. Okay, so it will comes in variable factors.
that can be changed. So let me give you an example over here. Example, let's suppose initially I have not started the production or manufacture goods. Okay, initially at zero level of output, there would be zero variable factor. Means that zero variable factor. It says that, or it refers that at zero level of output, variable factor is also zero because we doesn't acquire raw material, because we yet not started the production process. So therefore, we can say in the only in the short run we are able to make difference between fixed factor and variable factor, because in the short run, in the short period, we have limited time. We don't have much time to expand the level of factor. That is why land, we don't have much capital. Let me suppose take an example over here, machine. Okay, so machine takes huge cost. Okay, huge capital requirement for expanding the machine. Okay, now in the long run, in the long run, we can't say that there's difference between fixed factor and variable factor. That means there is no concept, there is no concept of fixed factor and variable factor, right? Variable factor. That means that means all the factors, all the factors becomes variable factor. इसका मतलब ये होता है कि लॉन्ग रन में हम लोग कोई ये नहीं कह सकते कि लॉन्ग रन में कौन सा फिक्स फैक्टर है, कौन सा वेरिएबल फैक्टर है, क्योंकि लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर्स के पास इतना समय होता है कि वो फिक्स फैक्टर को भी एक्सपेंड कर सकता है। जैसे लैंड, लैंड को उसके पास इतना समय एडजस्ट कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है लैंड वगैरह, बिल्डिंग वगैरह या मशीन्स वगैरह को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि कौन सा फिक्स फैक्टर है, कौन सा वेरिएबल फैक्टर है। तो सारे फैक्टर्स जो होते हैं लॉन्ग रन में वेरिएबल फैक्टर्स हो जाते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, मूविंग अहेड, एंड नाउ what is the formula, what is the basically total cost? Okay, so we see over here TC, we will talk about TC, TFC and TBC, and then again we will talk about AC, that is average cost. So this is TC, that is total cost. TFC stands for total fixed cost, and TBC total variable cost, right? So fixed cost, let me define the fixed cost first. What is fixed cost? Okay, so fixed cost refers to the expenditure, it refers to the expenditure incurred by the producer on the use of fixed factors, on the use of fixed factors of production, right? So fixed factors, it refers to the expenditure, ऐसी खर्च जब प्रोड्यूसर के द्वारा लगाई जाती है, ऐसी खर्च जब प्रोड्यूसर के द्वारा होता है जब वो फिक्स फैक्टर्स को एक्वायर करता है, फिक्स फैक्टर्स को प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में लगाता है। तो जो फिक्स फैक्टर्स को लगाने के लिए जो कॉस्ट होती है, वो जो एक्सपेंडिचर होती है, दैट इज व्हाट फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, नाउ another point, that is
another point that is, हाँ, one thing also, फिक्स कॉस्ट को हम लोग सप्लीमेंट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं. Supplementary cost, which can be also overheaded cost and also indirect cost. Indirect cost, right? Supplement cost, overhead cost and indirect cost, ये सभी fixed cost को के नाम से जाना जाता है. Now, principal components of fixed cost. Principal principal components of fixed cost. Number one, expenditure on machines and plants. Okay. Expenditure on machine and plant. मशीन एंड प्लांट वगैरह जो इस्टेब्लिश करते हो, उसको इस्टेब्लिश करने में जो खर्च आती है ना, उससे वो कह सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में आती है. सेकेंड, ये हो सकता है कि लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह एक्वायर करने में जो खर्च होती है, ठीक है, उसे हम लोग भी फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं. दूसरा, लाइसेंस फी वगैरह लेने में जो लाइसेंस लेने में जो खर्च आती है, ठीक है. लाइक अगर मैंने कोई प्रोडक्शन, मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं प्रोडक्शन करने जा रही हूँ, तो उस पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा. तो जो लाइसेंस वगैरह लेने में जो खर्च आती है ना, उसे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है. अनदर कंपोनेंट्स इन फिक्स्ड कॉस्ट विल बी wage and salaries of permanent staff. Okay, wage, salaries of permanent staff. ठीक है. परमानेंट स्टाफ जो होते हैं, तो उसमें जो वेजेस एंड सैलरीज देने में जो खर्च आती है ना, उसे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं. तो फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें कि फिक्स्ड कॉस्ट का सीख कैसा होता है, तो ये क्या है, टीएफसी. टीएफसी. तो यहाँ टीएफसी, why this TFC is showing horizontal or parallel to the x-axis. Okay. ये TFC is horizontal or parallel to the x-axis. इसका मतलब ये हुआ कि at zero level of zero output, TFC will be same no matter the producer is producing or not. No matter the producer has started to produce goods or not. It will be yet the cost of fixed cost will be same even even at zero level of output or increasing the output level. Okay, no matter. So we can say at zero level of or initial period or at zero level of output, the factor cost would be same. Or if you are increasing the level of output, that is from 0 to U1, if you are producing some units in production process,
then still the TFC will be same or it will be constant at all times if you are increasing the level of output. Okay, so TFC will be constant even though increasing the level of output, right? Now, another difference what is fixed cost and fixed cost, sorry, fixed cost and fixed factor of production. फिक्स्ड कॉस्ट एंड फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट तो मैंने बता दिया, बट फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ठीक है, तो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, मैं एक बार फिर से बता दूं, फिक्स्ड कॉस्ट refers to the expenditure incurred by the producers using fixed factors like fixed factors of production like plant, machine. Okay, so by definition we can see these factors cannot be changed during short period. Okay, शॉर्ट पीरियड में जैसे मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड्स में कि शॉर्ट पीरियड में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट फिक्स फैक्टर्स को, तो इसलिए जो हम लोग कैपेबल है ये बताने में कि कौन सा फिक्स फैक्टर है और कौन सा वेरिएबल। लॉन्ग रन में यही चीज सारे वेरिएबल्स सारे फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल्स बन जाते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास इतना समय होता है कि वो इजीली चेंज कर सकते हैं, राइट। तो फिक्स फैक्टर जो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर बन जाता था, वो लॉन्ग रन में वो भी वेरिएबल बन जाता था, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास काफी टाइम होता है, काफी, ठीक है, रिगार्डिंग चेंजिंग फिक्स फैक्टर्स। ठीक है, सो वी कैन से फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, जो बेसिकली लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, ये सब क्या है आपका फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। What is variable cost? What is variable cost? वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है, राइट। सो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ, जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को हायर करते हैं, जब वेरिएबल फैक्टर्स को प्रोडक्शन में लगाते हैं, तो उससे उस प्रोडक्शन को लगाने में जो खर्च आती है वही तो होता है वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट refers to it refers to the expenditure incurred by the producer on the use of variable factors of production. Let's suppose the raw material that I use in the process of production, and there would be, while using these raw materials, there would be some expenditure incurred by the producers in the process of production. So this expenditure will be what? Variable cost. Okay, so as I told that वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट के भी नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है कि जब हमारा आउटपुट लेवल जब जीरो हो,
तो उस केस में हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी नल होगा, नल। दैट मीन्स कि वेरिएबल कॉस्ट उस टाइम जीरो होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इन वेरिएबल कॉस्ट व्हाट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, प्रिंसिपल्स, principal components of variable cost. Number one, cost of raw material. Number second, wages of casual workers. Number third, expenses on electricity bill. Okay. Number four, and tier expenses. That means what? Depreciation we can say in one word. Okay. So depreciation is what? Wear and tear. जब हम मशीन वगैरह को यूज कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, लेट्स सपोज कि मैंने एक न्यू मशीन स्टैब्लिश किया। ठीक है, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए पहले मशीन की जरूरत होगी, तो मैंने बढ़िया एकदम न्यू मशीन स्टैब्लिश किया। ठीक है, वो क्या होता है, जब मशीन लगातार यूज होता है ना, तो उसकी वैल्यू कह सकते हैं कुछ खराबी आती है, कभी कभी उसको मरम्मत की जरूरत पड़ता है, तो वो ये सब कंप्लीट करने के लिए कह सकते हैं, ये सब में एक तरह से कह सकते हैं कि ये सबको ठीक करने के लिए कुछ कॉस्ट आती है, कुछ एक्सपेंडिचर लगता है। ठीक है, तो बिना खर्च के तो ये सब बढ़िया कह सकते हैं कि मशीन ठीक होगा नहीं। मशीन सपोज 5 साल मशीन चली, फिर 5 साल के बाद अचानक से खराब हो गई, तो उस मशीन को बनाने के लिए खर्च आएगी। तो वही होता है डेप्रिसिएशन, कि इसकी जैसे जैसे मशीन को जब हम यूज करते जाते हैं ना, तो उसकी वैल्यू घटती जाती है, लाइक वो खराब होता है। बियर एंड टियर इज व्हाट? डेप्रिसिएशन। तो उस मशीन की वैल्यू पहले के कंपेयर में थोड़ा कम हो जाता है, दैट इज व्हाट? डेप्रिसिएशन। नाउ another point, the shape of टीवीसी। अब ये टीवीसी क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट कह लो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह लो। ओके, बोथ आर सेम। जब सारे वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे, तो वही हमारा बन जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या होगा, इसका शेप कैसा होगा ये देखते हैं। ठीक है, इसका शेप जो होता है ना, इसका शेप जो होता है ये ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, टीवीसी, लाइक अ लिटिल बिट जिगजैग। टीवीसी, ये ये ओरिजिन से शुरू होता है। व्हाट डज इट मीन? ये ओरिजिन से शुरू होता है, इसका मतलब ये है कि जो इसकी जो वैल्यू है, कह सकते हैं कि जैसे मैंने बताया है कि जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब प्रोडक्शन ही नहीं किया, स्टार्ट ही नहीं किया, आउटपुट को बढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, तो उस केस में जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आती है वो भी जीरो आती है। तो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट आवर वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो जीरो। So as we increases the level of output, the variable cost also increases. Okay, so this is what total variable cost. This is the shape of TVC. Okay, now so now behavior of fixed cost, variable cost, and total cost, and the shape of TC curves.
एज द टीएफसी एंड टीबीसी। मतलब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि टीएफसी तो देख लिए, अब थोड़ा ये बात करेंगे कि टीसी का शेप कैसा होता है, टीएफसी का शेप कैसा होता है, थोड़ा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे भी ले लेते हैं। ये तो हमारा ये तो हमारा टीबीसी का शेप था। ठीक है, अब इसी में थोड़ा मैं बना लूं फिक्स्ड कॉस्ट का। तो ये है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हो गया टी एफ सी, ये हो गया टी एफ सी, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये हॉरिजेंटल होगा, वी ऑल नो। और टीसी क्या होता है? टीसी बस जस्ट ऊपर से स्टार्ट होता है। ये ऊपर से क्यों स्टार्ट होता है ये भी मैं बताती हूँ। दैट इज पैरेलल टू द टीवीसी। ठीक है, टी सी क्या होता है? ग्राफ थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, बट प्लीज जस्ट मेक प्लीज जस्ट मैनेज। ओके, तो क्या होता है? वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ टीसी इज इक्वल टू व्हाट? टी एफ सी प्लस टी वी सी। ठीक है, तो क्या होती है? लेट्स सपोज एट टीवीसी, लेट्स सपोज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, टीवीसी हमारी जीरो हो सकती है, पर टीएफसी तो जीरो नहीं होगी ना। इसलिए होता है टीसी जो होता है वो ओरिजिन बनकर थोड़ी सी ऊपर से बनती है, क्योंकि टीसी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। वो क्या होगी? वो टीएफसी के बराबर होगी। इसलिए टीएफसी से टच करके टीसी जाता है, दैट इज टोटल कॉस्ट। तो ये है टीएफसी, टीवी एंड टीसी का ग्राफ। अब थोड़ा बात कर ले, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? What is average cost? So average cost is the, we can say, cost per unit of output. Cost per unit of output. ठीक है, cost per unit of output is called average cost. ये होता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला देखिए तो क्या होता है? टी सी अपॉन क्यू। ठीक है, जो भी हमारी टोटल कॉस्ट है, जब उसको हम लेवल ऑफ कह सकते हैं लेवल ऑफ यूनिट से या क्वांटिटी से डिवाइड कर दे पर यूनिट, इसी को तो बोलते हैं ना कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, एक यूनिट से जब डिवाइड करते हैं तो उससे मिलने जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा होता है एसी, दैट इज एवरेज कॉस्ट। ओके, नाउ in the same way as we have defined the formula of TC, in the same way we can also define the formula of AC, AFC plus AVC. Okay, AVC. So AC, average cost, AFC, average fixed cost, AVC, average variable cost. Okay, बात कर ले अब कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कैसा होता है। तो शेप के बारे में बात करने से पहले थोड़ा बात कर ले, व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। बस एवरेज कॉस्ट की जगह बस हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लगा देंगे। तो इट इज द फिक्स्ड कॉस्ट per unit of output. So AFC is nothing but the TFC upon Q. Same way we can write it down the formula, but it would be only
Instead of AC, we will write here AFC. And instead of TC, we will write here TFC because we are talking about average fixed cost. Hmm. Now, talking about the shape of the average fixed cost. Hmm. तो क्या होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का शेप जो होता है थोड़ा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होता है ऐसे जस्ट लाइक ऐसे it will show you that AFC is just like touching the x-axis but it seems to touch but it will never touch the x-axis. Okay, it will never touch the x-axis. So this is what output and this is what AFC. So AFC is what this is showing and this is showing here the average fixed cost is just the rectangular hyperbola shape, rectangular hyperbola shape. AFC decreases as AFC decreases as output increases. Okay. So again, another point, average variable cost, and we will see the shape of average variable cost. Average variable cost. So average variable cost is what? It is also the variable cost per unit of output. So it is the variable cost per unit of output. Okay. ABC is equal to TBC. ABC is equal to TVC upon Q. So this is what average variable cost. Now, why average variable cost is holds U shape? We will see in this graph. Average variable cost generally contains U shape. U shape, right? This is average variable cost. So this is showing here that here this is on the x-axis what output we have taken. Okay, output we have taken, and here this is ABC, that is average variable cost. और ये दिखा रहा है average variable cost में कि पहले क्या होता है कि हमारे जैसे जैसे आउटपुट हमारे यहाँ जैसे जैसे आउटपुट को हम इंक्रीज करेंगे तो एवरेज वेरिएबल डिमिनिश मतलब डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है, बट एक लेवल पे आके एक मिनिमम पॉइंट पे आके जब हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, जब जैसे जैसे आउटपुट को इंक्रीज करेंगे तो एक मिनिमम पॉइंट पे आके एबीसी हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, फिर वहां से क्या होगा, फिर वहां से स्टार्ट करने लग जाएगा, एबीसी बढ़ने लग जाएगा, इंक्रीज करने लग जाएगा जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे. तो दिस इज व्हाट, दिस इज मिनिमम पॉइंट दैट इज मिनिमम एबीसी. ये मिनिमम एबीसी ये दिखाता है कि हमारे इस लेवल पे आउटपुट जो है मतलब आउटपुट जो है मिनिमम लेवल पे, मिनिमम एबीसी पे ये दिखा रहा है कि हमारा इस लेवल पे आउटपुट जो है Q1, अगर इसके बाद से हम आउटपुट को एक्सपेंड करते हैं, आउटपुट को इंक्रीज करते हैं
कॉस्ट की जो है वो इंक्रीज करने लग जाएगा। अब क्या रीजन हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं कि एज आउटपुट एक्सपेंस क्या होता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर में ऑपरेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, तो अब थोड़ा बात करें कि एसी जो है, अब एसी कर्व हमें कैसे मिलेगा। अनदर पॉइंट, एसी एज द summation of AFC and ABC, AC as the summation of AFC and ABC। ये कैसे, ये एक ग्राफ के थ्रू हम लोग देखते हैं। लेट सपोज ये AFC कर्व है, मान लीजिए नहीं, ये AFC कर्व है, ठीक है, और ABC कर्व जो है थोड़ा ऐसे गया, दैट इज ABC, और AC कर्व जो है इसके बीच में AC कर्व है। तो क्या होता है, ये यहां से यहां तक पॉइंट को शो कर रहा है, दैट इज एल पॉइंट, मिनिमम पॉइंट हो गया, मिनिमम पॉइंट, ये सॉरी, ताकि मिनिमम पॉइंट पे ABC इज इक्वल टू AFC, ये मिनिमम पॉइंट है। और फिर एक पॉइंट यहां लेते हैं जो ये दिखा रहा है L2, L1, ठीक है, तो ये दिखा रहा है AFC, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, AFC इज रिप्रेजेंटिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि AC जो है ये वर्टिकल समेशन है किसका, ABC एंड AFC का। तो AFC करेंगे तो AC हमें कर्व AC मिलेगा। ठीक है, so AC is what, the summation of ABC plus AFC, ये फॉर्मूला में भी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, AC जो होता है कभी ABC जो होता है कभी AC को टच नहीं करेगा, कभी भी टच नहीं करेगा। ठीक है, नाउ शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट जो होता है वो यूज शेप क्यों होता है। एक क्वेश्चन है कि व्हाई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, वो यू शेप में ही क्यों होता है। तो शॉर्ट रन एसी कर्व जो होता है वो यूज इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, ठीक है, इट टेंड्स टू राइज व्हेन देयर इज ऑन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। ठीक है, एसी टेंड्स टू फॉल व्हेन देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। ठीक है, एसी क्या होता है, इनिशियली डिक्रीज करता है क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर के कारण। ओके, जब एक कांस्टेंट लेवल पे आके, एक कांस्टेंट पे आके फिर वो एसी क्या हो जाता है, इंक्रीज करने लग जाता है ड्यू टू डिमिनिशिंग। तो हम लोग देखिए तीन पार्ट में बांट लिया। ठीक है, एसी कर्व को तीन पार्ट में बांटे, ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये क्या हो गया, कांस्टेंट, ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। तो इसके कारण जो होता है हमारा एसी कर्व जो होता है वो यू शेप का होता है। Now, marginal cost and the shape of marginal cost. Okay, so marginal cost and the shape of marginal cost. तो ये टॉपिक थोड़ा रह गया, मैं इसके बारे में कल डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज marginal cost and
The shape of marginal cost. मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है और मार्जिनल कॉस्ट का शेप क्या होता है, कल हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट है कॉस्ट का, और कल से हम लोग फिर थोड़ा देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट का कर्व देखेंगे, टेबल देखेंगे और डायग्राम देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा कंक्लूजन निकालेंगे कि ये यू शेप क्यों होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।